सो हिल व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस बैंग, सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि फोर्टनाइट का जो क्रैश आप लोगों को देखने को मिल रहा है उसको फिक्स कैसे करना है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ टू फिक्स फोर्टनाइट क्रैश इन दिस वीडियो। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। अगर आप लोग चैनल बने हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। सो लेट्स बिगिन। तो एज यू कैन सी दैट आई एम ऑन माई कंप्यूटर स्क्रीन। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। दिस वीडियो विल बी ऑफ दिस वीडियो हैज टू लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी। सो स्टे ट्यून्ड। सो या एज यू कैन सी कि अब मैं अभी इस टाइम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। दैट आई एम ऑन माई कंप्यूटर स्क्रीन नाउ। फर्स्ट थिंग, आई हैव टू मेथड्स टू फिक्स दैट क्रैश ऑफ फोर्टनाइट। मेरे पास दो मेथड्स हैं आप लोगों के फोर्टनाइट के क्रैश को फिक्स करने के। पहले मेथड की तरफ चलते हैं। पहला मेथड तो ये है कि आपको फोर्टनाइट की वेबसाइट पे जाना है। इनका जो कल जो अपडेट आया, यानी इफ यू वांट टू गो यू विल गो ऑन टू द फोर्टनाइट वेबसाइट एंड देन डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ फोर्टनाइट गेम एपिक स्टोर और फ्रॉम एपिक स्टोर. So yeah, the crash will be fixed. The number one reason is that you don't have an updated version. That's the reason that you are facing some crash or bugs or lag issues in your Fortnite game. But अगर आप लोगों को इस तरह के इश्यूज अगर आ रहे हैं, अगर आप लोगों ने गेम को अपडेट कर लिया है, फर्स्ट यू नीड टू गो एंड अपडेट योर गेम. द लेटेस्ट अपडेट इज ऑफ last night. The last night Fortnite Epic Store launched a new update of Fortnite last night at around 12 AM. Yeah. ओके, सो फोर्टनाइट का एक नया अपडेट आया है कल रात 12 बजे. तो आप उसको जाके अपडेट कर लो ताकि आपके लैग्स वगैरह फिक्स हो जाएं. फर्स्ट मेथड इज यू नीड टू गो टू एंड अपडेट, गो टू द एपिक स्टोर एंड अपडेट योर फोर्टनाइट गेम. वंस इट्स डन, then the second thing, if the lags and if the game is keep on crashing again and again, then you need to go to NVIDIA drivers. And yeah, you need to update your graphic card drivers, GPU drivers. Yeah, you can search from here which are your drivers. Wait a second. Yeah, you can search your drivers over here, and yeah, you can update your drivers accordingly, and then your lags will be fixed. If you are facing still lags and crash on your Fortnite game, and if you start Fortnite and it crashes down and it's closed, it shows you error, then you need to do one more thing which is very important, which I'm going to show you. Just go to your computer, this PC properties, and then go to your device manager and display adapters, your graphic card, and go to driver and update driver, this option, update driver, and search for automatic update. Browse my computer for driver software. Both, you can try both of these. I have a little bit old graphic card, that's why I'm showing you this video. I have a new 2080 Ti, but I'm making video on this graphic card to show you how you can play Fortnite even on your old GPUs. Okay, after doing this, after your drivers are updated, you can play Fortnite. Your crash will be over. There will be no crashes in your game. And if you still faces crashes after this, you need to go to their website, your graphic card website, it's AMD or NVIDIA, and go and update from here as well once again, and your crashes will be fixed. I am very hopeful. If you still faces some crashes in your game, then make sure to comment below, so I make a new tutorial on that as well, so it will help you a lot. And if you hit that like button, it will help me a lot for making this awesome content for you. Thank you so much for your support. See you in the next one. Peace out. Bang.